Okay, so today we are going to do the iris data set. Use the iris data set with orange data mining once practically, and we go through the whole thing. And then we'll proceed with some other data sets. Okay, so this is going to be an example of data science with orange data mining, right? So let's start. I'm sharing my screen. You also start simultaneously with me. So I'm opening my orange tool. Now, iris data set, which we had discussed earlier also, it is basically about flowers. And we had seen that it has got three category of flowers. Okay, now if I take you through the PPT also simultaneously, so you will get an idea about what am I talking about. So here we said that there are three category of flowers. So what are they? Iris setosa, iris versicolor, and iris virginica. Right? And the differentiating factors are these. If you see it here, the sepal length, the sepal width, petal length, and petal width. तो ये चार factors के ऊपर we are talking about the species. That's my target. That first I'm going to train the model with all this information which we have already in a table, in a data set, and then I'm going to ask him to predict. ठीक है? Now this data set is by default available in orange. जो हम नेक्स्ट बाद में करेंगे क्वेश्चन एक और उसके लिए आई विल प्रोवाइड यू विद द डेटा सेट यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम कैगल ऑल्सो तो अभी के लिए व्हेन वी ओपन अप विद ऑरेंज ये डेटा सेट एक्चुअली ऑरेंज हैज गॉट सर्टेन डिफॉल्ट डेटा सेट्स टू वर्क ओके so like if I start with it, let's make the first move as usual. Now the orange data set which we have is actually not in the CSV format. As we see, it's dot tab. It's in a tabular format itself. So that is why I'm directly starting from file. We have learned this much that अगर मुझे CSV फाइल इंपोर्ट करना है तो हम ये वाला ऑप्शन लेंगे एक नॉर्मल टैबुलर डेटा इंक्लूड करना है तो ये लेंगे एसक्यूएल टेबल इंक्लूड करना है तो ये लेंगे ठीक है लाइक दैट सो नाउ because I have worked on multiple locations also in my machine so here okay I've said it again last night तो यहाँ पे जो मैंने लास्ट टाइम आई हैड वर्कड ऑन दिस लोकेशन तो मेरा एक ये वाला लोकेशन है ये वाला ठीक है जहाँ पे हमने जोमेटो रिव्यूज वाला फाइल पिक किया था तो मेरा यहाँ पे सेट था जो भी आपका लोकेशन पे सेट था तो इफ यू आर ऑल्सो गेटिंग दैट थिंग देन व्हाट यू हैव टू सिंपली डू इज you have to pick this browse documentation sets when you do that it will take you to the orange data sets which are available and you can see that it's brown selected tab heart disease tab housing tab iris tab titanic tab and zoo tab ये default orange has provided you with these data sets which you can use. As of now, we're going to work with the iris tab, जो मेरा flower वाला है. ठीक है? So you pick up that, and you've not experimented much with the location, then in that case, by default, वो यही उठाता है. Okay? Second thing. So there are 150 instances, 4 features. We've seen that sepal length, width, and petal length, width. And here it is no missing value. So because it is an already treated data, I would say, cleaned data, तो यहाँ पे कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है लेकिन लेटर ऑन जब हम लोग कोई डेटा सेट डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे वी में हैव मिसिंग वैल्यूज जिसको हमें ठीक करना पड़ता है सो दो एज पर आर बुक एग्जाम्पल देर इज नो नीड ऑफ दैट सो दे हैव नॉट इंक्लूडेड दैट बट यहाँ पे वील यूज दैट ऑल्सो बिकॉज हमें वो आइडिया होना चाहिए कि जब हम एक रैंडम डेटा सेट पे काम करेंगे तो वी हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर फीचर ठीक है
Acha, when you are seeing it on your screen, are you automatically seeing this iris as a target? Yes. Okay. Now, if this is also not set, okay, for me it is, for this example, iris is a data set कि based on ये चार फीचर्स हमें इसको आइडेंटिफाई करना है, तो हम बता देते हैं मशीन को कि ये मेरा टारगेट वेरिएबल है और इसके ये तीन वैल्यूज है जो आपको सेट करना है. ठीक है. Sometimes we do not do it here. We have another option from where we can set it. That those were the two things which I want to tell you. One is the location. अगर ये डिफॉल्ट वाला लोकेशन नहीं आ रहा जहाँ से हम पिक करना चाहते हैं, this is the location actually. When you take the cursor, it shows you also where I've installed my orange. Otherwise, you have this option to pick the orange data sets. First thing. Second, here it has no missing value because I think it's a clean data. That is why उन्होंने clean करके दिया हमको. If you have missing data, और अगर यहाँ पे इतना समझ भी ना आए, you want to see exactly कितना कितना missing है or something like that, there's option for that too. And if not, then we have to clean it. And third, यहाँ पे target दिया हुआ है already. Otherwise, I have to set it from these options. You'll find numeric or categorical options in the type. जो numeric है वो that is a number based value, and जो categorical है that's a text based value. और यहाँ पे either they are features or target, mainly these two only we are going to work with. सो फीचर नहीं, हमें टारगेट पे काम करना है, तो यहाँ पे ना कभी कभी वो सेट भी नहीं हो पाता टाइम्स. तो यू हैव एन ऑप्शन हियर, बट द वे वेयर वी कैन डू इट ऑल्सो, दैट ऑल्सो टेल यू. यू हैव टू नो दैट. ठीक है. सो अगर आप चेंज करते हो लोकेशन एंड ऑल दैट, सो यू से एन अप्लाई एंड इट इज डन फॉर मी. माई फाइल इज सेट. नाउ सबसे पहले लेट्स चेक आउट दिस फीचर स्टैटिस्टिक्स ऑप्शन which I give it to my, I mean, I take the input from file and give it to it. फीचर स्टैटिस्टिक्स में यू गेट द होल आइडिया अबाउट आपका सेपल लेंथ का मीन क्या है, मोड क्या है, मीडियन क्या है, डिस्पर्शन क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है. सो दिस गिव्स यू अ स्टैटिस्टिक्स अबाउट द होल डेटा. ओके. So if you are using an example, I mean, we are going to use another example later as our practical thing, or maybe if you use it for a project. So you may take a step like this and take the output of this also. ये ऐसे 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 करके हमने ये फीचर्स इंक्लूड करें फ्रॉम, आई मीन ये विजिट्स इंक्लूड करें फ्रॉम द डेटा वेरिएबल. ठीक है. एंड हियर यू कैन सी द मिसिंग वैल्यू कॉलम आल्सो, एंड दे आर सेइंग 0 0 0 0 0. देयर इज आल्सो वन मोर थिंग टू सी, दैट देयर आर नो मिसिंग वैल्यूज यहाँ पे. 2 4 1 8, सो ऐसे पता चल जाएगा कि कितनी मिसिंग वैल्यूज है, एंड दैट्स हाउ मच परसेंटेज ऑफ द होल डेटा विच इज मिसिंग. ओके. सो दिस वे ऑल्सो आई कैन चेक आउट whether, I mean, how much missing data is there. वहां पे तो वो एक ओवरऑल दिखा देता है, एंड एग्जैक्टली किस कॉलम में कितना मिसिंग है वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं इन द फीचर स्टैटिस्टिक्स. So this is one of the widgets from the data tool itself. Okay. Another one which we have been commonly using was the data table, where I want to actually see the whole data in a tabular format. So let's do that also. I hope you're simultaneously doing with me. दिस इज द होल थिंग. यहाँ पे आयरिस का ये कैटेगरी है, अगर ये डायमेंशंस है, तो यहाँ पे यू हैव दिस थिंग गोइंग ऑन 150 इंस्टेंसेस, तो 150 रिकॉर्ड्स आर देयर, और तीनों का कैटेगराइजेशन. देयर इज वन ऑप्शन हियर व्हिच इज गोइंग टू गिव यू अ कलर डिमार्केशन. सो इफ यू से विजुअलाइज न्यूमेरिक वैल्यूज, तो ये क्या कर देता है, आपके तीनों कैटेगरीज में तीन कलर्स डाल देता है, एंड यू सी द सेम कलर व्हेन यू एक्सप्लोड इट इन द ग्राफ. है ना, ये डिफॉल्ट है. Blue is for iris setosa, and red is for versicolor, and green is they have put for virginic. तो इस तरीके से it's easy for us to understand. So that is one thing. डेटा टेबल में भी वो पूरा डेटा आपको टैबुलर फॉर्मेट में दिखा देता है. Then our book talks about exploding the data in the scatter plot. So let's do that. So I go to visualize and pick up the scatter plot from here. Keeping the scatter plot here, I am going to take the output from here and put it inside the scatter plot. And there then I'll find that
it has categorized based on this sepal length and sepal width. Of course, single set of values हो सकता है x and y. You have these are the places where you are getting the pictorial representation of it. Iris setosa, versicolor and virginica. यही कलर्स उन्होंने वहां पे भी यूज किया. ठीक है. So this is what we include in the scatter plot. This much is done for everyone. Yes. Okay, fine. तो अब हमें क्या करना है, हमें इस डेटा को अपने मॉडल को ट्रेन करना है मेनली. अच्छा, ओके, बिफोर दैट, if I am talking about that there is a missing data, so then what should I do? Okay, there is this transform category wherein you have the option of impute missing value in the डेटा टेबल. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस इम्प्यूट को लेंगे. मैंने 2 बार क्लिक कर दिया, सॉरी. सो दिस इम्प्यूट टेक्स द इनपुट फ्रॉम द फाइल एंड देन इसका जो आउटपुट होगा दैट विल नॉट हैव एनी मिसिंग डेटा. ठीक है, नाउ देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस. पहला, जनरली इफ यू आर ओपनिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम इट शोज डोंट इम्प्यूट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. देन यू से कि तुम डिफॉल्ट, ये जो मेथड्स है कि तुम एवरेज वाला डाल दो या मोस्ट फ्रीक्वेंट वाला रिप्लेस कर दो. You put it as any particular given value, distinct value if you want to give him. कोई न्यूमेरिक डेटा देना चाहते हो, or some other input is coming in which you want to replace. Random values you are asking him to replace with. और you are saying कि remove कर दो, जितने भी unknown values है उस वाले records को remove कर दो. ठीक है. So this is one thing. इस तरीके से हम लोग अपना जब नेक्स्ट सेट उठाएंगे कहीं और से जहाँ पे वो क्लीन्ड नहीं होगा, so we will have to use this option to do it. Now, were you able to set it to remove instances? All of you? Impute Yes. option, yeah, okay. Impute option is there in transform. And impute के अंदर जाके हम लोग बोलेंगे कि नहीं, हमें कोई एवरेज एवरेज रिप्लेस नहीं करना, आप डायरेक्टली इसको हटा दीजिए जो मेरे रिक्वायर्ड, आई मीन जिसमें भी इनकम्प्लीट डेटा है. राइट, सो देन ये मेरा डेटा इम्प्यूट के बाद जो निकलेगा दैट इज माई रेडी डेटा विच आई एम गोइंग टू यूज. When you see it in the book, they are directly using it from file only, but we are going to use it from the impute. ठीक है. So my transformation is also done. There's one more option now where I want to set my target. Okay. या आपके पास वही मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, so many data is there, so many columns are there, सारे columns के साथ मुझे काम नहीं करना है. So you have this option of select columns as well as select rows also are there. So whichever one you want to use. अब select columns में जब आप ये वाला input देंगे तो यहाँ पे very clearly you have these ignored features. तो ignored features मतलब आप यहाँ से उठा के इसको यहाँ कर दोगे. ठीक है. Then you have, these are the total 4 features are there. So if you want to remove anything that will come this side. You take one from here and set it to iris. ये सब कर रखा है इन्होंने यहाँ पे, but when you do it for a new data set, you will have to set it. So you'll have to just drag the option required from here and put it in the target area. Right? So this way also we are able to set my target, because target नहीं बताएंगे तो वो किसको judge करेगा based on the input. That is why the target has to be told to him. Okay? So यहाँ पे we select the columns required out of the whole data set if you're not wanting to work with the whole data set. Okay. And secondly, we can also set the target of my data. Right? You may also set the records, I mean the file which you are picking up as input for the file. वहीं पे जाके आप पहले columns remove कर दो. That also might be the case. You may do it that way too. But you have this option also. Okay. So finally, my data is ready.
Output is data with the features. So my data is ready. Now I'm going to talk about my checking of the models. Now models में कहाँ पहुंचे हम? मॉडल्स में हम जाते हैं यहाँ पे. ठीक है. Many of them are there again. Few names we have heard also, KNN and other ones. And here we are going to work with tree, random forest and logistic regression. ठीक है. और तीनों को हम कंपेयर करके भी देख सकते हैं कि कौन से मॉडल का आउटपुट किस डेटा सेट के लिए ठीक है. वी आर टेकिंग अप दीज बेसिकली टू चेक कि मेरा कौन सा मॉडल किस डेटा सेट पे. हो सकता है किसी डेटा सेट पे ट्री इज वर्किंग फाइन, रैंडम फॉरेस्ट इज नॉट वर्किंग फाइन. किसी और पे हो सकता है रैंडम फॉरेस्ट इज वर्किंग बेटर. Fine. So we take all three of them, 1 and 2 and 3. This one, then comes this one, and then comes this one. ठीक है जी. इन तीनों को हमें ट्रेन करना है विद इट. उसको सेट करेंगे. एंड सेकेंड इज फाइनली हमें क्या करना है? इवैल्यूएट. अभी हम प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हैं. वी आर गोइंग अबाउट द टेस्टिंग स्कोर. Let the model be trained with the data and then finally उसका परफॉर्मेंस हमें चेक करना. So I take the टेस्ट एंड स्कोर इंफॉर्मेशन और ये तीनों इनपुट हम उसको दे देते हैं. थिंग इसको लिंक कर दिया और दूसरा हमने डेटा को लिंक किया. अ क्विक थिंग केम इन. उसने उसको अपडेट करा. ठीक है. सो ही हैज टेकन द लर्नर. ये जो मॉडल्स है वो लर्न करेंगे. ही हैज टेकन द डेटा एज इनपुट. अब वो उसको लर्न कराएगा और फाइनली मुझे प्रिडिक्शन या इवैल्यूएशन रिजल्ट्स देगा. ठीक है. नाउ लेट्स सी कि इसके अंदर क्या है. अच्छा, अब इसके अंदर क्या हो रहा है? दैट when you do it for your practical file again, at least for the major things, जैसे हम एक आउटपुट ले सकते हैं डेटा का. डाल के डेटा का आउटपुट ले लिया, एक फीचर का ले लिया, एक स्कैटर का ले लिया. ठीक है. और एक इसका ले लिया. अच्छा, अब इसके अंदर जो मेजर थिंग्स ऑफ इंपॉर्टेंस है, नंबर वन इज वी आर यूजिंग द क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक. सो वी आर डन टेस्ट एंड सॉरी ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट एंड के क्रॉस फोल्ड. राइट. सो यहाँ पे इफ यू आर सीइंग इट, आई थिंक बाय डिफॉल्ट 10 आता है यहाँ पे. नंबर ऑफ फोल्ड्स चेक करो तो. बट 10 इज टू मेरे मेनी. लिए तो 5 ही है। अच्छा, तुम्हारे में 5 है. ओके फाइन. व्हाट अबाउट अदर्स? एवरीबॉडी इज गेटिंग 5. Yes, ma'am. Okay, you can actually change it also. I don't know, when I was doing it for the first time, it was showing me 10. So I set it to 5 because I was like 5 is enough, 10 is too much. Fine. So I'm setting the folds for here, and then you can see that it has given you a kind of answer. What is that? अब इसको ओवरऑल मैं F1 स्कोर पे जा रही हूँ because you have precision also, recall also, accuracy also. I'm going to the F1 score directly, and you see that it is like if you read it like this, it's 0.947, 0.953, 0.967. तीनों मॉडल्स का वैल्यू आंसर चेंज है. अब इसको जब हम परसेंटेज में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम बोलेंगे 94.7%, 95.3%, 96.7%. सो वी सी दैट हाईएस्ट परफॉर्मिंग मॉडल मेरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन. ठीक है. तो जो पूरा डेटा दिया है उसको उसने चेक करके अपना ट्रेन होके जो टेस्ट किया उसके बाद based on this cross validation technique, this is the result which is correct. Okay. Is it fine? You all are getting that? Can you see this value here? And we are able to judge it that yes, logistic regression वाला जो मॉडल है वो मुझे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ
रिजल्ट दे रहा है। एवरीबॉडी गॉट इट? नो प्रॉब्लम। Yes, ma'am. Got it. अच्छा, गॉट इट। आदित्य, यू आल्सो गॉट इट बेटा? Yes, ma'am. Okay, Sriram and Krishna also, I believe, have got it. Now we close. So my test and score is also ready. अब इसका हम confusion matrix देख रहे थे. Again, when you see it in the book, they have not used the other two models. They have only used three. But finally, we are trying to do it and learn extra from here for our project work and all. So I thought that let's include the ones which I feel that I can explain. Okay. So this is something that we can work on and we add that to our learning. अब आ जाओ कंफ्यूजन मैट्रिक्स पे। अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स है हमारा यहाँ। ठीक है जी। सो वी टेक आवर कंफ्यूजन मैट्रिक्स और हम बोलते हैं भैया टेस्टिंग स्कोर से इनपुट दे दो कंफ्यूजन मैट्रिक्स को, और वो मुझे कंफ्यूजन मैट्रिक्स इसका बना के दे देगा। ठीक है जी। सो 150 वो माई डेटा सेट। ये वाला आउटपुट स्क्रीन पे यू हैव टू पिक अप। आई ट्राई टू पिक इट अप लाइक दिस कि वो पूरा, बिकॉज दैट्स माय फाइनल थिंग, सो पूरा ग्राफ भी दिखे एंड you have this data also, right? अब इसमें हम लोग थोड़ा समझते हैं इसको, though I had explained it that day too, but still again. So 150 is my total set. अब हम देख रहे हैं ट्री का आउटपुट। हमने तीन मॉडल्स लिए, तो ट्री के आउटपुट पे we are saying that he has been able to predict all the iris setosa correctly. ये एक्चुअल है और ये प्रिडिक्टेड है। सो 50 के 50 he was able to predict. लेकिन आइरिस वर्सिकलर में he was able to predict, you can see यहाँ पे मैच है ना, ये वाला आइरिस, एक्चुअल आइरिस वर्सिकलर एंड प्रेडिक्टेड आइरिस वर्सिकलर आर 45 46. So 4 he wrongly predicted as iris virginica. ठीक है। So this is the result of my tree thing. For the third one, it was only able to predict, no, third one also 46 correct and 4 wrong. Okay. This is how trees work. Now let's see for random forest. Random forest में भी सेटोसा was all prediction correct. आइरिस में यहाँ पे मेरा थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, वो 46 और 4 था, 4 गलत एंड 46 करेक्ट। यहाँ पे इट इज 47 करेक्ट एंड 3 रॉन्ग, एंड द लास्ट वन इज सेम एज ट्री, 4 गलत एंड 46 करेक्ट। अब यहाँ पे because we have also seen in the test and score that logistic regression has given me the best output, so we can see that कितने गलत किए उसने। यहाँ पे it is 47 and 3, similar to random forest I think, yes, but the change is here. आयरस वर्जिनिका में ट्री ने 4 गलती करी थी, रैंडम फॉरेस्ट ने भी 4 गलती करी थी, बट लॉजिस्टिक्स में सिर्फ 2 करी। दैट इज वाई इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस 97 तक पहुंच गया। ठीक है। सो तीनों का कंपैरिजन ऑफ द मॉडल इज आल्सो शोन हियर एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स। इज इट फाइन? नाउ वी मे सेव इट। हियर इट इज। इसका जो एक्सटेंशन है, once you're working with it, nobody's going to ask you this extension as such, but maybe the examiner may ask, I don't know. So this is it, .ows. ठीक है। Try to preserve it now that you have done it, and you're going to just open it and उसके inputs के जगह पे जा जाके आप उसका screenshot ले लोगे for the practical file। उसको save करो properly at a location where you are keeping it. Like I also have a folder where I'm keeping it here. This is ready. You may take the screenshots while you do the feature statistics as I said. You may start from data table also. एक data table का लेना है, एक iris इसका लेना, फीचर का, एक स्कैटर का, एक टेस्ट एंड स्कोर का,
और एक कंफ्यूजन मैप इसका, that will be a complete one. ठीक है. Now we'll try to do the same thing with another data set. This actually I got from the class 10th book. I've updated that syllabus also. So that was an interesting thing. So I'll give you the link for the data. What I'll do is I'll try to give you the link here itself. मैं chat में डाल देती हूँ उसको, है ना. और अभी के अभी you will do it once so that you know that you're able to do it. ठीक है. So let me go to that file where I had kept it. Yeah, it's a case study on Palmer penguins. They are a species of penguins found in the Antarctic Peninsula region. And study about penguins include Palmer penguins often focus on their behavior, habitat, population dynamics, and the effects of climate change on their ecosystem. This data set is available in Kaggle also. So I take this and give it to you. You may download it from Kaggle too. Or they had given this data set in the, you can pick up the thing from the chat window. Or they had actually given me a drive link which has the downloaded folder. ठीक है. तो आई वुड प्रेफर दैट यू गो टू दी कैगल.com साइट और वहां से डाउनलोड करो. तो चीजें ही ना, वंस वी डू वंस और ट्वाइस वी अंडरस्टैंड इट बेटर. अब जब आप डाउनलोड करोगे यू विल फाइंड दैट देयर आर टू फोल्डर्स. ठीक है. दिस इज द लिंक विच ओपन्स, इट्स द कैगल साइट. आप लॉग इन कर लो एंड देन यू डाउनलोड द डेटा सेट. ये रहा आपका डाउनलोड का ऑप्शन. ठीक है. They have given the details of the data set also, but हम इसको यहाँ नहीं देखेंगे. We'll see it in the orange data file, but that's my thing. अच्छा, when you download it, please, I mean the zipped folder will have two CSV files. अभी CSV है, तो हमें फाइल से नहीं स्टार्ट करना अपना काम, import CSV से स्टार्ट करो. It has penguin size and penguin iter. इसमें से one of the files we use. Just let me check that also, because you've got the link and have you reached this particular place? Yes, ma'am. Okay, great. उसको डाउनलोड कर लीजिए. These are the files, penguin size and penguin iter, जिसमें से हम लोग एक फाइल को यूज करेंगे which is more logical. This has got a lot of details about their you know multiple details are there. We're not going to use this for the data science work. We are going to use the other one, so which is penguin size. But वो आपका पूरा ही डेटा आता है. You have species, you have island, you have Kalman length, you have Kalman depth, you have flipper length, you have body mass, and then you have sex. ठीक है. And then if you find that this is like a missing information, उसके बाद, and the three categories are Adelie, chin strap, and gel 2. ये तीन कैटेगरीज है. और एक देखो यहाँ पे एक मिसिंग इंफॉर्मेशन है जो कि पूरा ही मिसिंग है. देन आई कैन फाइंड दैट एक यहाँ पे मिसिंग है whether सेक्स इज नॉट गिवन. सो बीच बीच में हो सकता है और भी कुछ हो, तो हम इसको फीचर स्टैटिस्टिक्स में डायरेक्टली देख सकते हैं और इम्प्यूट करके ठीक कर सकते हैं, जो हम करेंगे. ये सारा नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल. So these are all informations which are incomplete for us. We will not keep this information because if we use the data like this and train my model, it will not be correct or proper as we say. ठीक है. तो हम लोग ये साइज वाली फाइल यूज करेंगे. सो डाउनलोड करके उसको एक्सट्रैक्ट करके अपनी जगह पे सेव कर लो. I think I already have it, so I'm not saving it. And then you will do this. This is your task. ठीक है.
Fine. Yes, I'm doing Yes. it. Okay, great. Karo, and then you will send me the output in the group so that I know that yes, you've understood. Go step by step, go slow. The recording of the class also I sent. So you have it with you. And I believe you should be able to do that. Once we have done this, then we will say, I want you to do either your project, anything on this data science या vision. वैसे तो NLP में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. But it should be aligned to SDG goals. So it could be something related to better living or any of these SDG goals. Orange data mining में अपना जैसे वो हार्ट डिजीज वाला है या कुछ और भी है, मल्टीपल ऑफ देम. तो ऐसा ही हम एक प्रोजेक्ट के लिए वर्कआउट कर लेंगे. बट उससे पहले यू शुड बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज वन ऑफ दीज कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर इन द practical exam for you to do, right? So there should not be any problem and it is not that difficult. थोड़ा सा स्टेप्स डेफिनेटली ध्यान रखना पड़ेगा. उसके लिए हम लोग 2-3 एग्जांपल्स करेंगे तो आई थिंक हो जाएगा. Tomorrow I want to do the vision example with you. Okay, so I'm closing now. Do it on your own. I think everybody should be able to do it. And then in the group, send me the pic of this that yes, ma'am, we have done it. And whether you've understood the actual purpose of doing the whole thing or not. Okay? Are you confident that you will be able to do it? Yes, Yes. ma'am, we'll try. Ah, that's great. That's great. Wonderful. Chalo then. Itna karo and then we'll proceed tomorrow.